Hello, today I am going to explain how to replace all the vowels. How to replace all the vowels present in the sentence with asterisk sign. Okay, instead of asterisk sign के बदले में हम दूसरा भी साइन डाल सकते हैं इन द प्रोग्राम. सो आज का जो प्रोग्राम है, कोई भी सेंटेंस अगर हम इनपुट करते हैं उसमें से जो भावेल है भावेल के जगह में एस्टेरिक साइन हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. सो द प्रोग्राम्स हाउ विल यू राइट, वी कैन इनपुट इट बाय यूजिंग द सेंटेंस. यू कैन इनपुट सेंटेंस जो है हम लोग इनपुट कर सकते हैं स्कैनर क्लास से और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से. सो स्कैनर क्लास से हम लोग पहले इनपुट करते हैं. तो स्कैनर क्लास में अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, when you write the program in by using scanner class, so you have to call java dot util that class name सपोज हम लिख देते हैं भावेल. Objects, you have to create scanner object. System.in. Enter the लिख देते हैं enter the sentence. So if you want to input any sentence, then you have to give in scanner class variable st string type. वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप में लेना है और ऑब्जेक्ट नेम sc डॉट सेंटेंस के अगर हम लोग इनपुट करना है तो नेक्स्ट लाइन देना है. So you have to give the next line. Now you have to find out the length of the sentence. int length st dot length. Now you have to give the one variable you have to take, that is char variable. Suppose ch. This is one space you have to give. Now look, I equal to 0, I less than length I plus plus. So इस सेंटेंस से जो भी भावेल है वो हटाना है. अगर इफ़ यू वांट टू राइट द सेंटेंस इन, जैसे सेंटेंस अगर स्मॉल लेटर में है, अगर मिक्स केस में है, अगर कैपिटल लेटर में है, तो क्या करना है. तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर इनपुट करेंगे इन केसेस ऑफ भावेल के में क्या करना है कि जैसे सेंटेंस अगर इनपुट हुआ इसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ऑप्शंस कैसे लिखेंगे, एस टी इक्वल टू द वेरिएबल एस टी है, यही रखो, एस टी इक्वल टू एस टी डॉट टू अपर केस में बना देते हैं. यू कैपिटल लेटर, सी केस कैपिटल लेटर, एक क्या कन्वर्ट हो गया कैपिटल लेटर में. इसमें तुम सेंटेंस को डालो स्मॉल लेटर में चाहे मिक्स्ड केस में, कंप्यूटर इसको कैपिटल में कर देंगे विद दिस स्टेटमेंट्स. क्योंकि भावेल्स ए ई आई ओ यू हम यहाँ पर जो कंडीशन देंगे, एक कंडीशन देंगे सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल लेटर. नहीं तो अगर ये स्टेटमेंट अगर नहीं करेंगे तो हमको कंडीशन स्मॉल लेटर में भी देना है, कैपिटल लेटर में भी देना है. जैसे यहाँ फर्स्ट सी एच इक्वल टू हम जैसे कैरेक्टर वेरिएबल लिए सी एच टू एस टी डॉट कैरेट ऑफ आई. नाउ इफ सी एच इक्वल टू ए और सी एच ई और आई और सी एच इक्वल टू आई ओ ऑल कैपिटल लेटर में देना है.
AEIOU। देखो यहाँ जैसे हम लिखे AEIOU, इसलिए हम इसको कैपिटल में कर दिए अपर केस में। अगर ये स्मॉल में अगर नहीं करते तो ये जो है ना, ये वी हैव टू गिव स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर बोल, CH इक्वल टू कैपिटल है, CH और CH इक्वल टू स्मॉल है, ऐसे करके देना पड़ेगा। तो it will better you can convert it into capital letter first, then you now the question is that if your suppose Java, so output what will come like that, the vowel replaced with asterisk signs. Now I am giving this system direct, otherwise you can take one variable also, direct you can place it here, system dot out dot print asterisk, or else if ch equal to space system dot out dot print space, or else system dot out dot print ch, ये भी कर सकते हैं। हो गया सेंटेंस। और क्या है, जैसे else if अगर नहीं देते ये भी चलेगा। अगर मान लो स्पेस है, ये हम नहीं देना चाहते हैं, तो ए रख दो, हो जाएगा। ए भावेल है तो एस्टरिक्स, एल्स जो भी है स्पेस है, अदर्स कैरेक्टर है, प्रिंट CH, यही लिखना। और ए वन प्रोसेस, then now you close it. Okay, another process without loop you can do these programs. Okay, इसमें क्या है, चलो एक बार दिखा देते हैं। जैसे जावा, हम इनपुट के जावा, ओके, सपोज लैंग्वेज LANGUAGE, फर्स्ट कंप्यूटर फाइंड आउट द लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसका लेंथ है। सो फर्स्ट द इंडेक्स पोजिशंस ऑफ 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, now see, when the value of I equal to 0, I 0 means CH equal to ST dot caret of I means 0 means J will come. So CH will bring J. J is a vowel. J is a vowel now. So print CH. Computer print J. Now the value of I will be 1. Okay. Now CH equal to what will come? A will come. Now A is a vowel, yes. System dot print asterisk. Computer print asterisk. Again I equal to 2. CH what will bring? V will bring. V is a vowel? No. So else part. Computer will read else part. Okay. CH equal to space L part this. So V. Next I equal to 3. CH what will come? A. Now A is a vowel, yes. B asterisk. Now I equal to 4. Space is there, yes, space, automatically there space will come. So I think you understand language alien. So if you don't give this line, then also no problem. Okay, this is one part. Now another process, if I want that statement system dot out dot print, two times I am writing this. So if you take one variable, here I am taking one variable, string word equal to one variable, then we can place it like that way also.
instead of this we can place it like that way also we can do. But we need to write WD equal to WD plus asterisk, else WD equal to WD plus CH. Okay, this last system dot out dot print, system dot print or println, anything you can write WD. You can write like this way also the programs. Okay, so this is also one process. For one क्या है कि पहले एक वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग वेरिएबल, यहाँ देयर विल बी नो स्पेस, इस वेरिएबल के अंदर में इसको भेज दो. कैसे काम करता है? जैसे फर्स्ट में जे है तो जे क्या वावेल है? वावेल नहीं है तो डब्ल्यू डी ए कॉन्कैटनेशन, इसको बोलते हैं कॉन्कैटनेशंस, ज्वाइनिंग. ओके, सो डब्ल्यू डी इक्वल टू डब्ल्यू डी प्लस सी एच मतलब जे आएगा. एस्टेरिक्स इसके बाद क्या है? वावेल है, ए वावेल है तो एस्टेरिक्स इसके साथ जुड़ जाएगा, जे प्लस एस्टेरिक्स मतलब ऐसे. इसके बाद भी ऑटोमेटिक भी, इसके बाद ए एस्टेरिक्स हो जाएगा, इसके बाद स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ओके, ये भी एक प्रोसेस है. क्लियर? और दूसरा और एक प्रोसेस हम दिखाते हैं. जैसे मान लो आई डू नॉट वांट टू फाइंड आउट द लेंथ. अगर मान लो हम लेंथ नहीं निकाल सकते तो क्या कर सकते हैं? तब कैसे होगा देखो. और भी एक प्रोसेस, जैसे यहाँ हम कैरेक्टर वेरिएबल लिए, ज़रूरत नहीं है, अपर केस बना दो. इसके बाद एस टी इक्वल टू एस टी डॉट अपर केस, एस टी इक्वल टू एस टी डॉट रिप्लेस. देखो एस टी इक्वल टू एस टी डॉट रिप्लेस ए कॉमा एस्टेरिक्स. जितना वावेल रहेगा, ए जितना वावेल रहेगा एस्टेरिक्स से कन्वर्ट हो गया. देखो विदाउट लूप आई एम शोइंग दिस, विदाउट लूप भी हम लोग कर सकते हैं. एस टी डॉट रिप्लेस, एक रिप्लेस कमांड है, रिप्लेस टू फाइंड ई कॉमा एस्टेरिक्स. एस टी इक्वल टू एस टी डॉट रिप्लेस ए भी कर सकते हैं हम लोग. एस टी इक्वल टू एस टी डॉट रिप्लेस. देखो हम कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं लिए, जिसमें हम इनपुट किए उसी में हम कर रहे हैं. दूसरा अगर वेरिएबल लेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ता है डब्ल्यू डी इक्वल टू एस टी डॉट रिप्लेस. इसके बाद डब्ल्यू डी इक्वल टू डब्ल्यू डी इट्स ई आई ओ asterisk, st equal to st dot replace u asterisk system dot out dot println st. इसको पिन कर दो, हो गया. ये भी एक प्रोसेस है, कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो प्रोग्राम इज दैट replace all the vowels present in the sentence with the asterisk signs. If you want to change with at the rate of signs, you give it here at the rate of signs. If you want to change it with any other symbols, you give that symbols here. Okay, so this is the string programs. Okay, bye. Okay, next one more programs I will upload. So those who are watching, please subscribe it. Okay, and you must give the comments, you must give the and must give like also. I am making the video just to share my experience, my teaching experience. I am sharing it in my channel, so it's my request to all of you. Okay, share it among the students of different schools also, and so that my channel also will be flourish. Okay, thank you, good day.